Hello students, the question is the phase difference between electric field E and magnetic field B in an electromagnetic wave propagating along z-axis is option A 0, option B pi, option C pi by 2 and option D pi by 4. So the problem is based on the topic electromagnetic field and we have to answer that what is the phase difference between electric field vector and the magnetic field vector. So to answer this, we have some basic understanding of the electromagnetic waves. In electromagnetic waves, electric field vector and magnetic field vector and the corresponding waveforms, if we see the waveforms are basically perpendicular to each other. For example, the electric field waveform is in xz plane. Electric field waveform is in xz plane and the magnetic field waveform is in the yz plane and the wave is propagating along the z direction. In the problem it is also mentioned that the electromagnetic wave is traveling the z direction. So we may choose electric field vector or electric field waveform in the xz plane and the magnetic field waveform in the yz plane. Both of them are perpendicular to each other 90-degree. But if we see that the origin point and the end point of this half wave cycle and the peak amplitude they occur at the same time. So there is no time difference between these two waveforms. When the value of electric field wave is 0, then the magnetic field wave is 0. When it reaches maximum value, electric field waveform reaches the maximum value, the magnetic field waveform reaches the maximum value. Then again, if it reaches 0, E wave reaches 0, B again it reaches 0. So in this way we can say that there is no time difference or the phase difference between these two waveforms. So the answer is 0 here. The phase difference is 0. Their plane is perpendicular to each other, but the phase difference is 0 because the time difference is 0. They occur simultaneously and they reaches the peak value simultaneously and then again reaches the 0 value simultaneously. So the phase difference is 0. So this is from this particular graph we can explain. Now we can explain this thing also in terms of the equations mentioned in the texts. The electric field is given by this equation E naught E equals to E naught sine omega t minus kz. Now this z represents the direction of the propagation of the electromagnetic wave. For example, if it is moving along the propagation of the wave is along the z axis, then here is z. If it is propagating along the x-axis, then x occur here. Now in the problem it is given that it is moving along the z direction, so z here. So for electric field and the magnetic field, this is the equation and we can easily see that, clearly see that there is no phase difference. This term inside the sign, in front of this sign, they are having the same phase. So we can say that electric and magnetic fields are in same phase. So the answer is option A. तो यहाँ जो प्रॉब्लम दी गई है इसमें कहा गया है, हमसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए. पर्टिकुलरली यहाँ पे बताया गया है कि वो z डायरेक्शन के अलॉन्ग मूव कर रही है, प्रोपेगेट कर रही है. तो अगर कोई वेव z डायरेक्शन के अलॉन्ग प्रोपेगेट कर रही है तो हमें ये भी पता है कि उसकी जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन होती है उसी के परपेंडिकुलर हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वेव फॉर्म होती हैं. यानी कि z डायरेक्शन की अगर हम परपेंडिकुलर लें तो x डायरेक्शन में फॉर एग्जांपल अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेव फॉर्म लेते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड वेव फॉर्म y एक्सिस के अलॉन्ग चलेगी. और अगर प्लेन के टर्म्स में बात करें तो xz प्लेन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड वेव फॉर्म है और yz प्लेन में हमारी मैग्नेटिक फील्ड वेव फॉर्म है. इन दोनों वेव्स को हम अगर ऑब्जर्व करें तो हम देखते हैं कि दोनों एक ही साथ स्टार्ट होती हैं, मैक्सिमम वैल्यू को भी एक ही समय में अचीव करती हैं. तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इनके बीच में फेज डिफरेंस 0 है. इक्वेशंस की हेल्प से भी हम ये चीज़ कह सकते हैं. अगर हम जैसे हमें टेक्स्ट में बताया जाता है इक्वेशंस जो हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की होती है इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के जेड. अगर कोई वेव जेड डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है तो उस केस में, और मैग्नेटिक फील्ड बी बराबर होता है बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के जेड. सो यहाँ पे हम देखते हैं साफ साफ कि ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है दोनों के लिए सेम है, कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है.
डायरेक्शन को भी अगर हम स्पेसिफिकली इंडिकेट करना चाहें, तो अगर वेक्टर की फॉर्म में इसको लिखना चाहें तो उसे भी हम लिख सकते हैं वेक्टर ई इक्वल्स टू दिस होल थिंग आई डॉट। ऐसे ही बी वेक्टर को हम लिख सकते हैं लाइक दिस जे कैप। सो इस तरह से हम डायरेक्शन को भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। और हम जानते हैं कि आई क्रॉस जे बेसिकली के बराबर होता है, यानी कि जेड डायरेक्शन का अक्रॉस जो है अलोंग प्रोपगेशन हो रहा है वेव का। तो हमें जस्ट ये बताना था इस क्वेश्चन में कि फेज डिफरेंस कितना होता है। तो इफेक्ट बेस्ड प्रॉब्लम है, इस फैक्ट को आप लर्न कर सकते हैं अच्छे से कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स के बीच में जीरो फेज डिफरेंस होता है। सो होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।